Hello, my dear students. Average people have wishes and hopes. Successful people have goals. So let's move ahead in achieving your goal of learning this programming language. And आपके इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में फंक्शन में ही बात करेंगे, आगे चलेंगे एंड रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेलिंग्स में बात करने वाले हैं. इसके पहले व्हाट वी हैव सीन इज वी नो नाउ what are the three stages of life cycle of the function, that is declaration, definition and call. Next to that we have seen like what are the calling function, called function, actual arguments, formal parameter and scope of the variables. उसके बाद हम लोगों ने देखा what are the types of function, that is predefined function as well as user defined function. And now it's a time to get into the much detailings about return type specifications, right? So let's see like what I mean by return type specification and what are the fundamentals of it. So as a general format, what we have seen in the function is function looks like this. It goes with return type, then followed by function name, followed by input parameters. एंड यहाँ पे अगर हम लोग सेमीकोलन रखते हैं तो इट बिकम्स डिक्लेरेशन. यहाँ पे अगर हम लोगों ने बॉडी रखा तो इट बिकम्स व्हाट, डेफिनेशन. दैट वी नो, राइट. नाउ यहाँ पे इस सेशन में पर्टिकुलरली बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिटर्न टाइप. तो एक फंक्शन से क्या क्या वैल्यूज रिटर्न आ सकता है. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज अगर हम लोग फंक्शन को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इस फंक्शन को यहाँ पे we are going to say like this is in need of input parameters. It will perform a specific task and after performing the task अगर वो कुछ values को return कर रहे हैं तो अपना पूरा focus होगा this particular entity के ऊपर, right? Okay. And what are the possible return values that can come out of this box, right? So जब भी हम लोग return type specifications के बारे में बात करते हैं तो एक function से there are two specific aspects that we can think of returning. एक चीज ऐसे जिस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, राइट. दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डोर क्लोज है, इसे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं आएगा. एंड अगर आपको ऐसे फंक्शंस लिखना है जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन लिखा, द जॉब ऑफ डिस्प्ले फंक्शन इज टू डिस्प्ले जस्ट अ स्ट्रिंग. तो उस फंक्शन से हम लोगों को रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, राइट. तो उस केस में वहां पे रिटर्न टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा void. And this is one more, I can say, the keyword that is to be introduced in what function as a topic, right? So जब आप return type लिखते हो void, it means that whatever the function you are trying to declare and define, उस function से कोई भी value return नहीं आएगा, right? Otherwise, the other thing, you can go on returning any data element. And any data element means what? Any type of data you can go on returning. So do we know what are the different types of data that we have in C and C++? Yes, we have such thing like it can be a primary data as well as it can be a secondary data, right? So we can have the primary data with three subsections that we know: character, integer and what? Float. Character का एक सब type, let me remind, char. Integer के three sub type, let me remind, short, int and long. And float के तीन sub types, that is what? Float, double as well as long double. And secondary में we have much more listing, that is starting with a pointer, and then we have arrays, then we have strings, then we have structures, then we have union, then we go with enum and many more user defined data types, right? Okay, something like this. So ये सारे के सारे हम लोग क्या रख सकते हैं as a return type.
तो हम लोगों ने अभी तक काम किया है सिर्फ दो फंक्शंस के ऊपर, एक डिस्प्ले फंक्शन, जहां पे डिस्प्ले फंक्शन को ऐसे किया था हम लोगों ने, void डिस्प्ले एंड, हाँ, so name of the function is display that doesn't accept any parameter, but उस फंक्शन से रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, so we mention the return type as what, void. So void means function should not return any value, function should not return any value, उस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट? ओके, अदरवाइज any kind of data element we can return from the function, and we know the data elements are spanned across two domain, primary data as well as secondary data. हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा था, कैसे? इंटीजर डू एडिशन, एंड यहाँ पे लिखा था इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, राइट? ओके, तो इस फंक्शन से क्या एक्सपेक्टेड है बाहर निकलना? इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्टेड है, सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, इंटीजर वैल्यू. अभी एक डेफिनेट क्वेश्चन आता है प्रोग्रामर के सामने कि कौन से फंक्शंस का रिटर्न टाइप वॉइड रखना है, कौन से फंक्शन का रिटर्न टाइप कोई ना कोई डेटा एलिमेंट रखना है. इट स्पेसिफिकली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इस फंक्शन में, डू एडिशन फंक्शन में, हम लोगों को दो नंबर का एडिशन करना था, एंड जो एडिशन का रिजल्ट आया उसको रिटर्न करके कॉलिंग फंक्शन को देना था. तो उस समय फिर हम लोगों ने डिसाइड किया to keep the return type as what, integer. It specifically depends on how you are going to design that particular module. जब आगे जाएंगे तो हम लोग इनके बहुत सारे वेरिएशंस देखने वाले हैं, मींस रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स के वेरिएशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ बहुत अच्छे से काम करेंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि कौन से फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या देना है. बट अब तक के रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशंस के लिए we can go on having the return types like this. If we don't want to return any value from the function, then return type has to be mentioned as void. Else we can go on returning any type of data. It can be a primary data as well as secondary data, and primary data may we know what are the different types, and secondary data may what are the different types. So I hope कि return type specifications are very clear, right? इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशंस में मिलेंगे और कुछ डिटेलिंग के साथ फंक्शन टॉपिक के ही. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.